Hi, good evening, everyone. This is Shefali Mam, and in today's session, we are going to discuss the practice questions on data structures and algorithms. So, as you know that UGC NET June 24 is approaching, so this is the high time to have the practice sessions. तो इन सेशंस में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड दोज हु हैव जॉइन द सेशंस जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन करके कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज वाले सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं. I'll try to touch every topic of data structures and algorithms, but make sure हर क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा and then we'll discuss the solution. Okay? So without wasting our time, let's go for the first question. Here, this is on the basis of the hash table. आपको एक hash function दिया हुआ है, keys दी हुई हैं और आपको बताना है कि टेबल में elements किस तरीके से आएंगे. Very good evening, Arun. Good evening, Mariam. Good evening, Nitika. Very good evening, Veerpreet. साथ साथ में करते हैं questions. Consider a hash table of size 7. आपको hash table का size 7 दिया गया है. That means index की range क्या होगी? It will be 0 to 6. तो जो available locations होंगे it will be 0 to 6 with starting index 0 and a hash function is given to you. तो अगर मैं यहाँ पे hash table बनाती हूँ with the size 7, oh, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 0 to 6 means size of hash table is 7. Hash function आपको दिया गया है. Assuming that the hash table is initially empty, which of the following is the content of the table when the sequence आपको 5 keys दी गई हैं. Using this hash function, you have to insert these keys in the hash table. Into the using the closed hashing, यानी कि अगर आपके पास collision आता है तो आप अलग से कोई भी chain नहीं बनाओगे. Here dash denotes that the empty location in the table. इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी collision resolution टेक्निक नहीं दी हुई. अगर by any chance collision होगा तो आप कौन सी collision resolution टेक्निक यूज करेंगे? This is what you have to assume here. Apart from that, you are given with the hash function h of x is given as 6x plus 3 mod 4. आप सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रखते जाइए and you'll get the value. So what's the correct answer? Option 1. Let's see. First of all, we have to check for the key 1, then we have to check for key 3, then we have to check for key 8, key 10, and key 15. 5. So 6 into 1 plus 3, 9 mod 4, that is nothing but it is equal to 1. तो यानी कि 1 key 1 कहाँ पे आएगी? At the index 1. Key 1 will be available at the index 1. तो अभी 0 पे कुछ भी नहीं आया, 0 पे key 1 नहीं हो सकती, so option 1 सबसे पहले eliminate होगा. आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी बोला है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए कि अगर कहीं पे आपका कोई ऑप्शन ऑलरेडी मैच हो चुका है तो आपको उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएगी. ओके, 3 into 6 is 18 plus 3, 21 mod 4, that is also equal to 1. तो 3 कहाँ पे जाएगा? Collision हो गया. Now we are getting a collision here. Where should I store this one? 3. Index 1 पे आ रहा है, index 1 busy है, so by default it will follow linear probing. So next available slot is 2, so 1 के बाद 3 store हो रहा है, तो कहाँ पे option मिल रहा है आपको? This is storing 1 at the index 1. Already we have eliminated the options, so answer is 4.
बट फटाफट से बाकी भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलरेडी आपके पास आंसर आ चुके हैं, आपने फर्स्ट की कैलकुलेट करवाई, इंडेक्स की 1 कौन से इंडेक्स पे जाएगी, एट द इंडेक्स 1, एट द इंडेक्स 1 this is storing 3, this is storing 8, this is storing 8, which is impossible. Options eliminated. बाकी के सॉल्व करने कर लीजिए। 8 into 6 is 48 plus 3 51 mod 4, that is equal to 3. So 8 will be available at index 3. 10 into 6 is 60 plus 3 mod 4. This is also equal to 3. Available slot is already busy. Sorry, next available slot is 4 क्योंकि index 3 है, 3 पे collision हो गया। 10 के लिए भी कोलिशन आ रहा है। आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ कोलिशंस भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे 10 स्टोर होगा एट द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट। 5 into 6 30, 33 mod 4, 33 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आता है 1। अगेन 1 इज बिजी, सो कोलिशन हो गया। 2 collision, 3 collision, 4 collision, 5 is the next available slot, so 5 will be stored at the index 5. So first slot is empty, last slot is empty. First slot is empty 1, 3, 8, 10, 5 and dash. Straightforward question. Question में आपको hash function given था and you just had to apply the hash function on the given keys and you'll get the resultant table. This is on the basis of the postfix evaluation. कल ही हम लोगों ने YouTube में डिस्कस किया था कि postfix expression को किस तरीके से evaluate करते हैं. So can you tell me that what will be the result of this question? What will be the result of evaluating the postfix expression 4, 3 multiplication 2, 5 multiplication plus 8 minus? So postfix evaluation is nothing but that's the application of stack. So let's maintain a stack. एंड हमने ये बोला था कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड स्टैक। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ऑपरेंड आ रहा है देन पुश इट इनटू द स्टैक, अगर ऑपरेटर आ रहा है देन वी टू परफॉर्म टू पॉप ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स दिए, सो टू पॉप ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड। सो हियर फर्स्ट पॉप विल बी गिविंग यू ऑपरेंड 2। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सेकेंड पॉप ऑपरेशन विल गिव यू ऑपरेंड 1। मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट गो थ्रू इट एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन on the operands, apply operator on the operands, and whatever is the result, push it back in the stack. So I'm just going to follow those steps. First of all, we are getting the operand, so push it into the stack. Next character is again the operand, push it into the stack, we are getting the operator. Operator के लिए pop out the first element, that is operand 2. So I'm getting here operand 2. Pop out the next element, operand 1. 3 into 4 is 12. Push back 12 in the stack. Next character is the operand. Next character is the operand. And then multiplication. Again, we need to perform two pop operations. Top element is the operand 2. Next element is the operand 1. 2 into 5 is 10. So 10 will be pushed back in the stack. Then is plus. For plus, pop out the top element, that is 10. Pop out the next element, that is operand 1. So here we get 12 plus 10 is equal to 22. 22 will be pushed back in the stack. Next is operand, push it into the stack. Then we are getting the operator. Pop out the element. First pop will give you operand 2 and operand 1. 22 minus 8 is nothing but that is 14. So 14 will be pushed back in the stack. Read the next characters. String is over. Expression is over. So whatever is available in the stack, that is the result. Answer is 14. So कुछ भी आपको expression दिए, just keep on repeating these steps. So the idea is very simple. If you are getting the operand, then simply push it into the stack. If it's the operator, then apply the 3 steps, 2 pop operations followed by push operation. पहला
पॉप ऑपरेंड 2 क्यों दे रहे हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. सो इन दिस सेशन वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस because all the concepts we have already covered. I'm not going to cover all the concepts again. तो जो भी concept है relevant videos में discussed है. If it will be the smaller part or majority of you might be facing the difficulty, then we may discuss that topic. Otherwise, these sessions will be just focusing on covering the questions. Okay, because I want to cover more and more questions ताकि आपको solutions मिल जाए and आप अपने answers verify कर पाओ. Next one. Here this is asking for the priority queue. Priority queue is implemented using an unsorted array. So what is the answer? Insertion and minimum element को extract करने के लिए how much time it's gonna take? So this is complexity based question. What is the worst case running time of insert and extract min? कहाँ से? What is the data structure? In the implementation of a priority queue, आप queue implement कर रहे हो, but this is a priority queue. We had discussed 4 implementations कि आप unsorted array से implement कर सकते हो, sorted array से implement कर सकते हो. You can implement it with the heap or you can implement it with the B tree. But here they are saying that priority queue is implemented using an unsorted array. So what will be the worst case running time complexity? Any idea? Unsorted array है तो किसी भी एलिमेंट को unsorted array में एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा? Insert means you are putting the element in the data structure and already the elements are unsorted. That means you need not to take care. It's just like कि आपका पूरा रूम बिखरा हुआ है, आपको एक दो चीजें ले जाके और रखनी है, आप randomly कहीं पे भी रख दोगे. So you need not to scan the whole array or you need not to perform any additional operation. So definitely insertion is gonna take theta of 1. Constant time complexity, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि array का size क्या है. So option 2 and 4 are eliminated. Now I want to extract the minimum element. अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है, उसमें से आपको मिनिमम एलिमेंट निकालना है, कितना टाइम चाहिए? क्योंकि एलिमेंट्स अनसॉर्टेड हैं तो आपको बेसिकली लीनियर सर्च अप्लाई करना पड़ेगा. यू नीड टू स्कैन द होल एरे इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट. सो दैट मीन्स स्कैनिंग द होल एरे मीन्स एक एक करके आप हर एलिमेंट को चेक कर रहे हो. इफ n एलिमेंट्स आर देयर, दैट्स गोना टेक n थीटा ऑफ n टाइम. सो करेक्ट आंसर इज 1. ऑप्शन 3 में क्या बोला है कि मिनिमम एलिमेंट भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा. वो तब होता अगर आपके पास एरे सॉर्टेड है. इफ द एरे इज सॉर्टेड, मिनिमम एलिमेंट बिगनिंग पे होगा या एंड पे होगा, बिकॉज एरे विल बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ सॉर्टेड एरे. बट सॉर्टेड एरे में फिर आप कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में आ रहे हैं. अगर आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है, आपको एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में रखने हैं, तो हो सकता है जो नया आपने एलिमेंट ऐड किया उसके बाद आपको स्वैपिंग करवानी पड़े. सो अनडाउटेडली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. Next one, this is based on the longest common subsequence. That's nothing but the application of dynamic programming. So this is the question from dynamic programming. अब हमें ये पता है कि dynamic programming में it returns the result when you evaluate all the, when you calculate the values for all the sub problems. तो usually questions lengthy होते हैं. तो आप my suggestion is कि पूरा का पूरा solve करके मत देखो. यहाँ पे longest common subsequence बोला है. Then see what can be the maximum length of the sequence. Maximum length क्या आ सकती है? You can see here the length of x is 7 and length of y is 6. तो इसका मतलब कॉमन सबसीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कैन बी 6, नॉट मोर देन 6. यानी कि जो आंसर आएगा इट विल बी 6 और लेस देन 6. अब 6 कब होगा? when this whole expression is a part of the other sequence as well. C A D B C B क्या आ रहा है? नहीं आ रहा. तो इसका मतलब 6 तो पॉसिबल नहीं है. In order to check for the answer 5,
क्या लेंथ 5 बनेगी? इसका मतलब इनमें से किसी एक कैरेक्टर को स्किप करके देखो, आर यू गेटिंग द लेंथ 5? और यू कैन चेक हियर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मैचिंग हियर. कितने एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं? एनीवन? सो यू कैन मैप इट हियर. अगर मैं 5 लेती हूँ, नो कैरेक्टर्स आर मैचिंग B, A and C. और कोई पॉसिबिलिटी? लेंथ 5 इज पॉसिबल, लेंथ 5 इज नॉट पॉसिबल. आप इजीली देख पा रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा रेकरेंस रिलेशन यूज करके पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूजुअली जो भी क्वेश्चंस डायनामिक प्रोग्रामिंग के होते हैं वो लेंथी होते हैं. आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है, इसीलिए जिस तरीके से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, वी आर एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. So here the longest common subsequence of x is obviously length 4 के और भी sequences आ रहे हैं, but here they are not asking for the number of longest common subsequences. They are just asking the length of the longest common subsequence, and that is 4. It is nothing but option 3. Okay, but those who wants to learn the concept of longest common subsequence, we have discussed this topic in detail in the super coaching. तो आपको recording मिल जाएगी, proper example लेके हमने इसको solve किया हुआ है. After discussing the examples, we wrote the recurrence relation. Correct? Now let's move on to the next question. This is from artificial intelligence. So those who have covered the artificial intelligence, this is based on alpha beta pruning. Can you return the answer for this question? Anyhow, pruning और minimax algorithm में basically ये algorithm हम कहाँ पे use करते हैं? This is used in the game playing. So we had discussed two methods for game playing. अब क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. गेम प्लेइंग, दो मेथड, दो एल्गोरिथम्स है. वन इज मिनिमैक्स एल्गोरिथम and other one is alpha beta pruning. Alpha beta pruning. Pruning का मतलब होता है कि जो पाथ फॉलो करके आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा, या फिर कुछ ऐसी नोड्स हैं जिनको एक्सप्लोर किए बिना भी आपका आंसर वही आने वाला है, सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट इट. सो मिनीमैक्स एल्गोरिथम और अल्फा बीटा में डिफरेंस इतना ही था. मिनीमैक्स में आप हर एक नोड को एक्सप्लोर कर रहे थे, बट इन प्रूनिंग वी आर जस्ट गोइंग टू एलिमिनेट few options. What is the answer? Okay, very good. So people are getting it right. It's option 2, 5. So 3, and since we want the maximum value, 3 and 5 में से maximum is 5. तो at least minimum में यहाँ पे value 5 तो आएगी आएगी. And here we want the maximum value 6. Do I need to check this value? I don't need to check this value, because if even if it's taking the maximum value, तो यहाँ पे value 6 or greater than 6 आएगी, 6 or more. Even if it's 6 or more, but I need the minimum value here, तो मुझे इस पार्ट को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी प्रूव्ड. एग्जाम में अगर आपको प्रूनिंग नहीं भी करनी है, आप मिनिमैक्स से फाइंड कर लो, क्योंकि आपको एक छोटा सा ग्राफ ट्री दिया हुआ है. यू जस्ट नीड टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली हियर द मैक्सिमम वैल्यू इज 2. सो कम से कम मिनिमम वैल्यू 2 तो आएगी आएगी. बट अब इसके बाद आफ्टर दिस whatever values are available here, I want to take the maximum. इस केस में हम बोल रहे हैं here will be getting 2 or less. Will it impact the overall answer? Already we are getting here 5, तो maximum में 5, I'm so sorry, तो maximum में आपके पास 5 तो आएगा ही आएगा. So I need not to explore this part, तो इसको क्या कर देंगे? Prove. एनी हाउ अगर आप मिनीमैक्स भी अप्लाई कर देते तो भी आपको आंसर आ जाता. मैक्सिमम ऑफ बोथ इज 5, मैक्सिमम ऑफ बोथ इज 9, दोनों की मिनिमम वैल्यू विल बी 5. सो आंसर रिमेन्स अनचेंज्ड. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 and 2 is 2. Maximum value of 0 and 1 is 0. What is the minimum value? Even if you are taking here 0, 0 भी आता है तो भी maximum of 5 and 0 is 5. So जैसे मर्जी कर लो, आंसर is 5.
Next one, this is based on the spanning tree. What will be the answer? 5, option 2. जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें 5 और 2 था, although fifth option is not there, so it's better either only write the options or the answer value. Let's go with the options. Just write 1, 2, 3 or 4 in the chat section. Okay. So this question is based on the spanning tree. That's nothing but that's the application of greedy technique and algorithms. So spanning tree के लिए हमने दो algorithms discuss किए. We talked about Kruskal's and Prim's. Anyhow, this is not the specific question on Kruskal's or Prim's. यहाँ पे कुछ statement, कुछ property की बात कर रहा है. It is saying that let G be an undirected connected graph. Connected graph है तभी आप spanning tree find कर सकते हो. अगर unconnected होगा तो spanning tree is not possible. Connected graph with distinct edge weights. All the edge weights are also distinct. हमने कुछ properties की थी. अगर आपके पास connected graph है, distinct edge weights है, तो एक ही tree बनता है. Only one spanning tree is possible. But if we have more than or we have the edges with the repeated edge weights, तो उस case में possibility है कि आपके पास एक से ज़्यादा spanning tree बने. But minimum cost is gonna be the same. Option 2, option 3. Emax be the edge with the maximum edge weight and Emin be the minimum edge weight with the minimum weight. Every minimum spanning tree of G must contain Emin. हर minimum spanning tree में minimum value आएगी. All the edge weights are distinct. We have to tell that which statement is false. अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एज वेट्स हैं तो डेफिनेटली ई मिन विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज अगर आप क्रुस्कल्स एल्गोरिथम यूज करते हो तो हम ई मिन से ही स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज ट्रू. Next, if Emax is in a minimum spanning tree, then its removal must get disconnected graph. Obviously, worst case में हम Emax को include कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप Emax को include नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास disconnected graph बन रहे. This statement is also true. इन सब के लिए हमने examples लिए हुए हैं. I don't know why still people are getting it wrong. Arun, how is it option 2? If we consider some graph like A, B, C, 1, 2, 3, and यहाँ पे मैं D ले लेती हूँ, and this is 4. Now just consider the edge weights. 1 को let me mark this as E min. This is the edge with the minimum edge weight. जो भी हमें criteria दिया है, this is the undirected connected graph with the distinct edge weights, and this is E max. अब जब आप ट्री बनाओगे, स्पैनिंग ट्री बनाओगे, लेट्स स्टार्ट विद द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम. क्रुस्कल्स में हम ये बोलते हैं टेक द मिनिमम एज वेट. सो मिनिमम एज एग्जिस्ट कर रही है ए और बी के बीच में. सो वी हैव टेकन ए टू बी 1. नेक्स्ट मिनिमम इज 2. सो कोई साइकिल नहीं बन रहा, डेफिनेटली वी कैन इंक्लूड दिस. नेक्स्ट मिनिमम इज 3. वी कैन नॉट टेक 3, बट डेफिनेटली आई नीड टू टेक ई मैक्स. अगर मैं Emax को नहीं लूं, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप Emax को नहीं लेते then you may get a disconnected graph. अगर मैं इस edge को हटा दूं तो definitely हमारे पास disconnected graph आएगा. So Emax is the minimum. Emax is in a minimum spanning tree, then its removal must be disconnecting the graph G. So this statement is also true. No minimum spanning tree contains Emax. अभी हमने एग्जाम्पल लिया है मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन कंटेन Emax in the worst case scenario. So this statement becomes false. और आपसे false ही पूछा हुआ था. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, बिकॉज यूजली टेंडेंसी क्या होती है, माइंड में क्या चल रहा होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है दे आर आस्किंग फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स. G has a unique minimum spanning tree. Definitely, since edge weights are distinct, graph is connected. तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है कि अगर ग्राफ कनेक्टेड है एंड यूनिक
एज वेट्स है कनेक्टेड एंड यूनिक एज वेट्स, तो डेफिनेटली स्पैनिंग ट्री भी आपके पास यूनिक बनेगा. एज वेट्स, then we'll get unique minimum spanning tree. Unique or distinct edge weights. What if we have a connected graph? Let me write here. What if we have a connected graph with repeated edge weights plus repeated edge weights? तो कितने स्पैनिंग ट्रीज मिलते हैं? तो उस केस में हम बोलते हैं मोर देन one minimum spanning tree may be possible. May लिखा है because it depends on the arrangement of the edges and the graph. May be possible. And third condition हम लोगों ने discuss की थी, if the graph is disconnected, अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो ट्री कभी भी कनेक्टेड हो ही नहीं सकता. एंड वी नो दैट ट्री कैन नेवर बी डिसकनेक्टेड. तो इस केस में हम बोलते हैं जीरो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज पॉसिबल बिकॉज फॉर अ डिसकनेक्टेड ग्राफ we cannot have the connected tree. Correct? So even fourth statement is true. Correct answer for this question is 3. Very few people attempted this question. I don't think ऐसा कोई भी point है जो हम लोगों ने minimum spanning tree में discuss नहीं किया हुआ. Each and every point was covered with the help of the example. Next question. This is on the basis of the max heap tree. Consider an array. After building the heap from the array, the depth of the tree, आपको depth बतानी है, heap की depth कितनी होगी, and what will be the right child of max heap. So that means first of all, you need to construct the max heap. For construction of the max heap, there are two methods. Construct max heap. कितने तरीके? दो तरीके हैं. One is adding the elements one after another. Adding elements one after another, and other method is using build heap method. Prefer किसको करते हैं? Obviously we prefer build heap method because adding n elements one after the another, this is gonna take n log n. मैं कुछ additional points भी बता रही हूँ. हो सकता है upcoming questions में use हो सकता है कि इस practice session में ना पूछा जाए उस पे question, but आपके exam में आ जाए. Using build heap method, if you are going to construct a tree, that's gonna take linear time complexity order of n. So let's quickly construct the max heap. Build heap method क्या बोलता है? जिस भी order में आपको elements दिए हुए हैं, just add the elements 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8 and 7. एलिमेंट्स ऐड कर दिए. बिल्ड हीप क्या बोलते हैं? स्टार्ट हीपिफाइंग द ट्री फ्रॉम द फर्स्ट इंटरनल नोड. तो 7, 8, 14, और वैसे भी हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स. हाफ ऑफ द नोड्स आर द लीफ नोड्स, हाफ ऑफ द नोड्स आर द इंटरनल नोड्स. सो एनी हाउ you'll end up here, and starting from the first internal node you have to reach to the root node. We are talking about the maxi. Yes, we are talking about the max heap. That means parent should be greater than both of its children. Parent should be greater than its children. So 16 is greater than its child. True. 2 is greater than both of its children. No. So need to do the swapping. Here we'll get 2 and 14. Now this is done. 3 is greater than. Ab next internal node pe aa jao. So we are moving like this. Okay, so 3 is greater than both of its children. No, so swap it with the greatest child, that is 10, and here we get 3.
Go to the next node, 1. 1 is greater than both of its children? No. So swap it with its greatest child. So here we'll get 1 and here we'll get 16. क्या यहीं पे रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब आपने स्वैपिंग करवाई 16 और 1 की तो इसने सब ट्री को डिस्टर्ब कर दिया. 1 is smaller than its child, so swap 7 and 1. Now the swapping is fine. Go to the root node, follow the same process. 4 will be swapped with the greatest child, that is 16. So here we'll get 16. And after that 16 is swapped with 4. यहाँ पे आपके पास 4 आ गया. 4 is 4 greater than both of its children? No. So it will be swapped with its greatest child. So here we'll get 4, 14 and 4 here. 4 is greater than both of its children? No. Here we'll get 4 and 8. So ultimately this is the tree. So 16 is on the root. Maxi means maximum element will be on the root. Already we have got the answer, but clearly मैं tree बना रही हूँ. So here we get 10, 8. To the right side we have 8. To the left side we have 7, 9, 3, 2, 4 and 1. तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको क्या बताना है? डेप्थ ऑफ द हीप. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द हीप? वी नो दैट रूट इज एट डेप्थ 0. तो बेसिकली अगर आप रूट से स्टार्ट करते हो, यू कैन सी हियर डेप्थ इज 0, डेप्थ इज 1, डेप्थ इज 2, डेप्थ इज 3. So depth is nothing but it's 3. Right child of the max heap, root के right पे क्या रहा है? 10, so it is 10. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. सो दिस इज द रिजल्टेंट max heap and the answer is 2. Next question. So in this case, it's talking about the complexity, running time complexity of the dynamic programming, something related to the NP hard. पहली 3 statements है which are related to the dynamic programming. So the running time of the dynamic programming algorithm is always theta of rho, where rho is the number of subproblems. What is the running time of the dynamic programming? क्या ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स? नो. आपने ये तो बता दिया कि लेट्स से P इज द प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2. अगर मेरे पास 3 सब प्रॉब्लम्स है, क्या हम ये बोलेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 3? नो. If I have n sub problems, can we say that the time complexity will be n? It is saying that the time complexity depends on only on the number of subproblems. Obviously, it does not depends only on the subproblems. The statement is false. किस पे depend करता है? It depends on the number of subproblems into हर problem को solve करने के लिए कितना time चाहिए into time taken to solve each subproblem. So first statement is incorrect. Second one, when a recurrence relation has a cyclic dependency, it is impossible to use that recurrence relation. बिना modify किए आप उस recurrence relation को use नहीं कर सकते in the dynamic program. Obviously, अगर आपके पास cyclic dependency है, तो you won't be able to get the answer. So this statement is true. For a dynamic programming algorithm, compute all the values in a bottom-up fashion is asymptotically faster than using the recursion and memoization. क्या आप डायनामिक प्रोग्रामिंग में सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो इन द बॉटम अप फैशन एंड दैट इज फास्टर देन यूजिंग द रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन? नो. आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो
तो repeated problems can be there, तो definitely it will increase the time complexity. Time complexity को कम करने के लिए ही हमारे पास memoization का concept आया था. So even this statement is also false. Next, if a problem X can be reduced into a NP-hard problem, then X must be a NP-hard problem. No, even this statement is also false. That is NP-complete problem. So this is also false. So the statement true is only option 2. ये clear हुआ? Nobody returned the answer for this question. That means complexity इसमें problem है. Your favorite type of question, मैच द फॉलोइंग. मैंने आपको हर बार बताया है कि बेटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बेसिस पे क्वेश्चंस एल्गोरिथम्स है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज. सो एल्गोरिथम्स की एक लिस्ट दी हुई है, कॉम्प्लेक्सिटीज की लिस्ट दी हुई है. यू हैव टू मैप कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन से एल्गोरिथम के लिए यूज होती है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टार्ट फ्रॉम द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एल्गोरिथम जिसके लिए यू आर श्योर, you are confident, and eliminate the options. अगर एक आधी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं भी पता, even then you can get the answer 100% right. So what's the answer for this question? 3. Okay, so here heap sort की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है, that is for sure n log n, so it is 5. And quick sort is for sure n square. Worst case time complexity is n square. तो n पे 5 और 4 आ रहे हैं, तो पहले ये चेक कर लीजिए n पे 5 और 4 आ रहे हैं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. So you all are getting it right. Anyhow, we know that for breadth first search it is theta of v plus e. For depth first search also it is v plus e. So this is also, this is 2, this is 1, and definitely Robin Carb algorithm is option 3. So correct answer for this question is undoubtedly 3. Everyone is getting it right. Awesome. This is based on solving the recurrence relation. You are given with the recurrence relation, you have to solve it. इस recurrence को आप दो तरीके से कर सकते हो. You can solve it using the substitution method, or you can solve it by converting this problem to a Master's theorem. Right now this is not in the format of the Master's theorem. Directly आप Master's theorem apply नहीं कर सकते. You need to modify it. So T of n is given as 2t root n plus log n. सब्सटीट्यूशन से तो सब लोग कर लेंगे. सो लेट मी सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग टू द मास्टर्स थ्योरम, एंड दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच. कन्वर्ट करने का जब भी इस टाइप के रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, देन इन दैट केस वी आर अज्यूमिंग n is in the format of 2 raised to power m. Let's introduce a variable m. T of this becomes T of 2 raised to power m is equal to 2t root n होते हैं n raised to power 1 by 2, और मैं n को लिख रही हूँ 2 raised to power m, so it becomes m by 2 plus, if this is the scenario n is equal to 2 raised to power m, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ log, apply log, then we'll get m is equal to log n with the base 2. Although options में कहीं भी आपको log नहीं दिया है, so you can ignore the base. बेस कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप बेस को स्किप कर सकते हो, बट अगर आप ट्रांसफर फाइंड कर रहे हो, देन डेफिनेटली हियर विल बी हैविंग द बेस 2 प्लस log n इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू m. अब सब कुछ m की फॉर्म में आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो. सो t ऑफ 2 को मैं कंसिडर कर रही हूँ, दिस इज द फंक्शन, लेट्स से s. सो आई एम गेटिंग हियर s ऑफ m इज इक्वल टू 2 s of m by 2, and this is already m.
Now we can apply the Master's theorem. Apply Master's theorem. YouTube की प्लेलिस्ट में भी जब आप जाओगे आपको मास्टर्स थ्योरम मिल जाएगी, बट आई हैड डिस्कस द एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम दैट इज इन द सुपर कोचिंग. सो वी हैव मास्टर्स, बेसिक मास्टर्स थ्योरम एंड एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम. यहाँ पे बेसिक मास्टर्स थ्योरम काम कर रही है. इन दिस केस यू नीड टू आइडेंटिफाई A is 2, B is 2, और जैसे ही आपको A और B मिल जाते हैं सबसे पहले हम फाइंड करते हैं n raised to power log A with the base B. So this comes out to be n raised to power log 2 with the base 2. जब आपके पास base B same होता है value becomes 1, so this is equal to n. यहाँ पे आपके पास m है, so let me take this as m, and this is nothing but this is equal to f of n. और जब सेम केस आता है दैट्स अ केस ऑफ टाई, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिटर्न करते हैं? जब टाई आ गया सो इट इज थीटा ऑफ एफ ऑफ n into log n. So this is what I'm writing here. F of m is nothing but m, so we'll get here m log n. Ma'am, if no question is, if question number is present, then it's easy to identify the answer. Question number, okay, from next session onwards, I'll include the question numbers as well. आज वाली पीपीटी में क्वेश्चन नंबर्स नहीं है, और लेट मी मार्क द क्वेश्चन नंबर्स. मैं मार्क करने शुरू कर देती हूँ. अभी के लिए हम ये कर सकते हैं, जो भी स्लाइड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं क्वेश्चन नंबर दे देती हूँ. यू कैन जस्ट रेफर टू दैट. ओके, all right, but here we are getting the answer in the form of m. m हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, but the original reconciliation was in the terms of the n, तो हमें यहाँ पे n की फॉर्म में लेना पड़ेगा. so t of n is nothing but that is equal to theta of m की वैल्यू m और n में रिलेशन है, m is nothing but log n, so I'll substitute here log n, log, it is log, और m की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज log n. सो इट कम्स आउट टू बी log n log of log n, log n log of log n, that is nothing but it's option 4. Is this clear? Next question. How many spanning trees can be found? We do not have any formula. अगर आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है, if it's not a complete graph, and this graph is not a complete graph, so how will you be able to find out the number of spanning trees? It's not based on the calculation of the cost of the spanning tree, क्योंकि edge weights given नहीं है. So let me mark the words as this is A, B, C, D. How many spanning trees are possible? इसको करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. वन इज यू कैन ईदर गो फॉर द मैनुअल अप्रोच, फाइंड मैनुअली. डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ वर्सेस और एजेस कम है, एक बार के लिए आप मैनुअली फाइंड कर लोगे. बट व्हाट इफ द ग्राफ कंटेन्स मोर नंबर ऑफ वर्सेस और द मोर नंबर ऑफ एजेस? there should be method to find out the number of spanning trees. So that method is known as Kirchhoff's theorem. Method 2, we have Kirchhoff's theorem. First of all, let's find it manually. A, B. जब भी हम spanning tree की बात करते हैं, all the verses should be there, but no cycle should be present. A, B and D. D को कितने तरीके से connect कर सकते हैं? A, B, C is connected. D can be connected with A. D can be connected with B. और D can be connected with C. तो आप अपने माइंड में एक पैटर्न बनाकर जब भी आप मैनुअली फाइंड करते हो, डोंट टेक द एजेस रेंडमली, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अपने माइंड में एक पैटर्न रखिए. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले डी का कनेक्शन देख रही हूँ. डी कैन बी कनेक्टेड विद ए, डी कैन बी कनेक्टेड विद बी, डी कैन बी कनेक्टेड विद सी. नाउ
A को कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि B को लेना ही लेना है. In the next case, I'm going to eliminate this. A is connected with D and D is connected with B and B is connected with C. B को C से कनेक्ट करने के लिए D से भी कनेक्ट कर सकते हो. So A, B, C and D. One, two, three. Option 4. Definitely yes. So which method have you used, Arun? Next one. A, मैं यही space use कर रही हूँ so that we get enough space for Kirchhoff's theorem. Kirchhoff's theorem effective है provided आपको cofactor find करना होता हो matrix का, because in the Kirchhoff's theorem we will be finding the cofactor for the matrix. A, B, C. Then next we have A, B, C and D. इसके अलावा और कोई possibility? There is no other possibility. So we have 1, 2, 3. A, B, D and C. Kind of confusing, right? आप देख रहे हो सिमिलर पैटर्न्स बन रहे हैं हमारे पास. सो वी आर गेटिंग हियर 8 स्पैनिंग ट्रीज. दिस इज वन वे. आप मैनुअली फाइंड कर रहे हो, बट हमें इससे बेटर कोई थ्योरम, कोई मेथड चाहिए, कोई एल्गोरिथम चाहिए. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज वी कैन यूज द किरचॉफ्स थ्योरम. किरचॉफ्स थ्योरम ये बोलते हैं सबसे पहले आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लो. सो क्रिएट एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स. So 4 vertices are there. तो जो आपके पास matrix बनेगा, we will be having 4 rows and 4 columns. 4 rows and 4 columns. This is A, B, C, D. Adjacency matrix सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 value contain करता है. 1 आएगा अगर कोई दो vertices adjacent है, 0 आएगा अगर vertices adjacent नहीं है. So A is adjacent to A. यहाँ पे हमारे पास कोई भी loop नहीं है. There is no for loop. So definitely diagonal values will be zeros. All the diagonal values will be zeros. Next one. For B, A to B, yes, edge is present. A to C, not present. A to D, it is present. B to AB है, B to C, B to D, it's all present. From C, B to C to A is not present. C to B is present. Not present means 0. C to B is present. C to D is also present. Now D to A is present. D to B is also present. D to C is also present. So we have created the adjacency matrix. Now जितने भी आपके पास diagonal elements हैं, इनको हम replace करेंगे with its degree. So replace the diagonal zeros with its degree. Step 2. Replace diagonal zeros with degree of the vertex and existing ones, जो भी आपके पास existing ones हैं, existing ones with -1. मैं resultant मैट्रिक्स यहीं पे बना रही हूँ 1 के पैरेलल में. So resultant matrix is here because we do not have enough space. तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ. A की डिग्री कितनी है? Degree of A is adjacent with 2 vertices, so here we get 2.
existing one को -1 कर देंगे, 0 remains 0 and -1. Similarly for the next one, this will be -1. 2b is connected with 3 vertices, so it will be replaced with 3, -1 and -1. Take the next one, c. This is 0, -1. C is adjacent with 2 other nodes, so 2 and existing one to -1. -1, -1, -1, and here we get 3. Now you can find out the cofactor of any element from the resultant matrix. Step 3, find cofactor of any element. Matrices में आप cofactor find करना सीखते हो. So here I am taking, let's say first element का cofactor ले लेते हैं. So this row and this column will be discarded because 2 belongs to the first row and first column. So here I'll get the elements as okay. So here we'll get the elements as 3, -1, -1, -1, 2, -1, -1, -1, and 3. Now change the signs. Sign up alternatively लोगे. Plus, minus, plus. Correct? Now calculate it. 3, where should I write this? Okay, let me write the expression over here. So after finding the cofactor, we'll be getting here 3 -1, 3. So if I'm taking this one, so we are left with the elements 2, -1, -1. Cofactor find करना आता है सबको. So this is 2 into 3 minus -1 into -1 is +1. So 6 minus 1. So 3 into 6 minus 1. Now minus of -1. So this will be +1. Again, this belongs to this row and this column. So it is -3 minus 1. -3 minus 1. Then plus of -1. This will be -1. Last row, last column and first row को हटा दो. So -1 and -1 is 1. -2 and -1 is 2 plus 2. Simplify it. 3 into 5, 15 minus 4 and minus 3. 15 minus 7 is 8. That is nothing but 8. So with Kirchhoff's theorem also we are getting 8. Anyhow answer same आएगा. Manually एक बार गलत आने के chances हो सकते हैं, but Kirchhoff's theorem always returns the correct answer if you want to find out the number of spanning tree. But Kirchhoff's theorem से आंसर तभी आएगा if you are comfortable with finding the cofactors. Step 1 में हमने क्या किया? I repeat this process again. In step 1 we have created the adjacency matrix for the given graph. That means if the vertices are adjacent, we'll be marking 1. If the vertices are not adjacent, we'll mark it as 0. After that, replace the diagonal elements with its degree and existing ones with -1. तो resultant matrix आ गया. उसके बाद किसी भी element का cofactor ले लो and this cofactor will return the number of spanning trees. Number of spanning trees. How 6 minus 1? Okay. See, हम किसके साथ ले रहे हैं? 3 के साथ. So if I'm taking this 3, तो ये 3 किसको belong कर रहे हैं? First column and first row. ये वाले elements हटा दो तो आपके पास matrix क्या बचा? It is 2 into 2 minus 1 and 3. जब भी आप कोफैक्टर फाइंड करते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, सो इट्स मल्टीप्लाइड. और जब आप रिवर्स में जाते हो, हाउ वी राइट दिस एक्सप्रेशन? लेट मी सी इफ वी हैव स्पेस ऑन द प्रीवियस स्लाइड. ओके, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 -1 -1 and 3.
तो इसको मैंने कैसे लिखे 2 into 3 माइनस, क्योंकि आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो और किसको मल्टीप्लाई करवाने, दोनों एलिमेंट्स को, -1. So ultimately this comes out to be 6. -1 plus हो गया, this is -1, so it comes out to be 6 minus 1. So this way we have taken each and every element. 3 के साथ चेक किया, फिर जब आपने -1 लिया तो डेफिनेटली -1 जिस रो और कॉलम को बिलोंग कर रहे, जस्ट एलिमिनेटेड this row and this column. तो एलिमेंट्स क्या बचे, -1 -1 3. So I got here -1 -1 and 3. So this is nothing but 3 into -1 minus -1 into -1. So that comes out to be -3 -1. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -3 into -1. So this way we have taken the next element of the row, that is -1 इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया, जब आप इन एलिमेंट्स को हटाओगे you will be left with this part. So it is -1 into -1 is 1. So I have written here -1 and then minus साइन रिवर्स हो गया, -1 into 2 is -2 और इसका आपने क्या लिया, नेगेटिव, क्योंकि साइन चेंज हुए यहाँ पे. ओके तो इसमें as such कुछ भी नया नहीं था. The only thing is we are just finding here the cofactors. So if you are comfortable in finding the cofactors, so I would suggest you to use the Kirchhoff's theorem in order to return the number of spanning trees, because इसमें गलती होने के कोई chances नहीं है, provided you are comfortable with the cofactor. Next one, a list of n strings, each of length n, is sorted into lexicographic order. Lexicographic order means alphabetic order using the merge sort algorithm. The worst case running time of this computation is, merge sort की time complexity क्या होती है, if you have n elements, then what is the time complexity? Time complexity for merge sort, be it the best case or the worst case, it remains n log n, where n is representing the number of elements. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें n strings है and हर एक string की लेंथ कितनी है, n. So there are n strings. This is string 1, this is string 2, this is string 3 and so on. String 3 and कितने strings है आपके पास, n strings है. अब आपको इन सबको merge करना है using the merge sort. So what will be the running time complexity? Running time complexity is n log n, but if you see here number of characters कितने होंगे, जब आप merge करोगे आपको number of characters कितने मिलेंगे, there are n strings और हर एक string के अंदर आपके पास n elements है into n elements. The total number of elements that you will be getting is n into n. This is representing the number of elements. So it is n square. And कितने levels होंगे इसमें जब आप merge करवाओगे, log n levels, because we have n strings. Levels कितने बन रहे हैं, log n. So it is n square log n. Next question. Oh, दो तीन questions artificial intelligence के आगे, but anyhow now you all are comfortable with these concepts because we have already covered this in artificial intelligence. So B is the branching factor, M is the maximum depth, branching factor and depth of a search tree is given to you. What is the space complexity of the greedy search? We have talked about the time complexity and we said that the time complexity and the space complexity is same. So if B is the branching factor and D is the depth of a tree, then what will be the time complexity or the space complexity? Very good. Undoubtedly, it is B raised to power n. Nothing to explain. हम already time complexities discuss कर चुके हैं.
Correct answer is option 3. Okay, I'll start marking the questions. Question number, let's say this is 10. I don't know kaun sa hai, randomly I have taken any number. In this case, the text is given to you and you have to tell that what will be the average length. Average length hoti hai total length divided by the total frequency or the total probability. So average length is nothing but that is total length, टोटल जितनी भी लेंथ होगी डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दी है, सो विल बी टेकिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दैट इज ऑलवेज 1. किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 1. So I guess we had solved this question in the master class. Option 2. Yes, that's the right answer. सो लेट्स जिन लोगों का आंसर नहीं आया, जिनको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आया हफमैन कोडिंग पे. सो द बेस्ट अप्रोच इज, आपके पास जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, आपको सारे कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है ए बी सी डी ई. Probabilities are given as 0.11, 0.40, 0.16, 0.09 and 0.24. First of all, arrange them in the sorted order. आप इनको sorted order में रख लोगे in the ascending order. So the least probability is with D, 0.09. Next one is for A, 0.11. Next is for C, 0.16. Next is for E, 0.24 and B, 0.40. Now, we'll start constructing the tree. कहाँ से start करते हैं? From the leftmost, from the least two elements. यहाँ पे least two elements are D and A. D and A will be on the least level. यहाँ पे आपसे कोड नहीं पूछा तो आप किसी भी साइड पे स्मॉलर एलिमेंट को रख सकते हो, बट usually what we do is we keep the smaller probability or the smaller frequency on the left hand side and greater one on the right hand side. रीजन इज, आपको एक पैटर्न इसलिए फॉलो करना पड़ता है जब आप कोड जनरेट करते हो, बिकॉज हफमैन कोडिंग नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द कोडिंग टेक्निक जो कोड्स जनरेट करते हैं. सो 0.9 दिस इज फॉर डी एंड देन फॉर ए 0.11 merge, then here we are getting 0.20. हम ट्री कैसे बनाते हैं? Every time we have to pick the two minimums. So 0.20 will be coming somewhere here. Take the next two minimums. 0.20 तो आ ही रहे. So next is for C. This is 0.16. क्योंकि ये smaller है इसलिए I'm keeping this on the left hand side. This is the probability of A. Merge it up. This comes out to be 0.36. यहाँ पे कहीं पे आएगा 0.36. Delete the next two mins. We are getting here E 0.24 E merge करवा के आपके पास आ गया यहाँ पे 0.60. Take the next two minimum, so here will be getting 0.40 and जब आप इसको merge करोगे you will get here the total probability as 1. This is the probability for B. अब आपको क्या करना है? You just need to check कि कितनी कोड लेंथ होगी, तो आपको कोड्स असाइन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. लेंथ देखो रूट से कितने डिस्टेंस पे 1, यानी कि बी को का जो कोड होगा उसकी लेंथ होगी 1, ई का जो कोड है उसकी लेंथ होगी 2. फॉर सी द कोड लेंथ विल बी 3, फॉर ए 4 एंड फॉर डी ऑल्सो इट विल बी 4. 3 bits are required and here 4 bits are required. तो इस तरीके से आप directly bits mark कर सकते हो. You need not to write the codes. Bits, bits and bits. अब multiply करके add कर लो. Simply this comes out to be total length is equal to, total length will be equal to plus 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 plus.
सारी टर्म्स का क्या लेना है आपको? सम. So this comes out to be 0.44 plus 0.40 plus 0.48 plus 0.36 plus 0.48. That is nothing but 2.16. So correct answer for this question is 2.16. Next one is on the basis of the asymptotic notations, again from algorithms. The running time of an algorithm is given as order of g of n if and only if order of g of n kab hoga, Bego notation. So we have talked about the asymptotic notations. Worst case के लिए we use the Bego notation. Worst case Bego notation आता है, big O notation, and for the best case we use omega notation. Omega notation. Okay, let's say this is question number 11. Answer 1. So here it is saying that the running time of an algorithm is big O of g of n. किसी भी algorithm का हम running time अगर consider करना है algorithm के लिए, we consider the worst case. If and only if its worst case running time is big O. Big O मतलब worst case की बात कर रहे हैं, so worst case running time is big O of n and its best case is omega of n. आपको नोटेशन भी मार्क करके दी हुई है, seems like this is correct. Worst case running time is omega of g of n. Best case के लिए हम omega notation use करते हैं, worst case के लिए we use big O notation, so this is not correct. Big O notation is equal to big omega notation, so this is returning the average case. जब आपके पास worst case और best case same होता है, that returns the average case, so even this is not the answer. And big O is intersection, it has nothing to do with the small omega notation, so even D is not the answer. So undoubtedly it's option A, 1 only. Based on solving the reconciliation, let me mark this question as question number 12. T of n is given as 8t n by 2 plus c of n. What will be the time complexity? Which method will you be using? We have discussed three methods. हमारे पास तीन methods है reference relation को solve करने के लिए. Substitution method, Master's theorem and recursive tree method. कौन सा method use करोगे? Obviously we opt for the Master's theorem because agar Master's theorem applicable hai, definitely will get the answer quickly. So here f of n is n. This is constant, so you can ignore constant. A is 8. मैं सारे rules discuss नहीं कर रही हूँ Master's theorem के. I'm just directly applying the Master's theorem. B is 2. Find out the value of n raised to power log a with the base b. That is n raised to power log 8 with the base 2. 8 is nothing but 2 raised to power 3. 2 raised to power 3. Whatever is in power that comes in front and ये term आपके पास 1 हो जाएगी. So it comes out to be n cube. F of n or n raised to power log a में से कौन सी term greater है? Obviously it is n cube. So correct answer for this is n cube. Next question. Number 13. Binary max heap contains n numbers. The smallest element can be found in how much time? आपके पास max heap tree है, but you are supposed to return the smallest element. What will be the time complexity? Come on. 1? Yes.
रीजन इज जब आपके पास मैक्स सीड ट्री है, मैक्सिमम एलिमेंट इज अवेलेबल ऑन द रूट, मैक्सिमम एलिमेंट इज अवेलेबल ऑन द रूट, और मिनिमम एलिमेंट कहां पे होगा? स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट दैट विल श्योरली बी एट द लीफ लेवल. हम सिर्फ इतनी गारंटी दे सकते हैं कि लीफ लेवल पे होगा. लीफ लेवल पे लेट्स से n नोड्स आर देयर, तो कैसे चेक करोगे? यू नीड टू चेक ईच एंड एवरी नोड, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते इट विल बी अवेलेबल ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड और ऑन द राइट मोस्ट साइड. देयर इज नो कॉन्स्ट्रेंट लाइक दैट. तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि मिनिमम एलिमेंट विल बी एट द लीफ लेवल. सो आप पहले एक एलिमेंट चेक कर रहे हो, देन नेक्स्ट एलिमेंट, डिलीटिंग द फर्स्ट मैक्सिमम एलिमेंट, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट. अगर आप n के n एलिमेंट्स को डिलीट करते हो तो लास्ट एलिमेंट जो डिलीट होगा दैट विल बी द लीस्ट एलिमेंट. But definitely if we are deleting n elements from the max heap, that is going to take n log n time complexity. उससे कम टाइम में आपके पास max heap है, इसको आप array में represent कर रहे हो, simply apply one single scan and you will get the minimum element. तो डेफिनेटली n log n से तो बेटर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द linear time complexity, that is order of n. Next, the maximum number of comparisons needed to sort 9 items using the radix sort is. अगर हम इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं then what will be the number of comparisons required? 9 आइटम्स हैं, हर आइटम के अंदर आपके पास 5 डिजिट्स हैं एंड ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑक्टल नंबर. ऑक्टल नंबर मींस with 8 digits. So 9 items are there. Each item is having 5 digits and each digit is represented by the octal number. That's it. So this is nothing but it is 360. All right. This is question number, let's say 14. Next one. Let G be a directed graph whose vertex set is the set of the numbers from 1 to 100. If there is an edge from a vertex I to a vertex J, if and only if J is equal to I plus 1. तो edge कब exist करेगी? When J is equal to I plus 1 or J is equal to 3I. Now, the minimum number of edges in a path in G from the vertex 1 to 100. अब दो तरीके, 1 to 100 जाके बेटर आंसर मिलेगा और 100 to 1 में बेटर मिलेगा. लेट्स सी. 1 to 100 अगर आप जा रहे हो, वी वांट द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. अगर हम लीनियरली जाते हैं I plus 1, next one, next one, तो डेफिनेटली विल गेट मोर नंबर ऑफ एजेस. तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कौन सा फंक्शन देगा? दैट इज J is equal to 3I. करेक्ट. Now the thing is, अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं है तो आपको वहां पे +1 करना पड़ेगा. 1 से आप यहाँ पे 3 पे जाओगे, then 3 to 6, 3 into I, so 3 to 9, then 9 into 3 is 27, then going to the next one 81. आगे नहीं जा सकते, so you have to go linearly. आपने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया, but is it working with 3? Is it working with 3? No. इसके आगे आपको linearly लेना पड़ेगा 82, 83, 84 and so on. So it will be returning more number of edges. Now let's try with, ये हमने try किया था 1 to 100. Now let's try with 100 to 1. 100 is not a multiple of 3, तो डेफिनेटली 100 to 1 जाने तो हम वैल्यूज को डिक्रीमेंट करेंगे. डिक्रीमेंट करके यू आर गेटिंग रीचिंग टू 99. अब हमें पता है लीनियरली चलना है 99, बट 99 एज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इसका मतलब अगर I की वैल्यू 33 होती तो डेफिनेटली J 99 होता. 33. Again this is a multiple of 3, so I can reach to 11. After that
Now this is not a multiple of 3. अब आपको linearly जाना पड़ेगा 10, not a multiple of 3, 9. Now again it's a multiple of 3. I'll be going to 3. 3 to 1. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपके पास दो ऑप्शंस है, either you can opt for I plus 1 or you can opt for 3i, multiple of 3. So in which case you are getting the minimum number of edges जब आप 1 से journey start कर रहे हो and you have to reach 200. So in this case we are getting like approximately 20 edges here क्योंकि यहाँ पे linearly move करेगा और उससे पहले आपके पास 4 edges और आएंगे. So 23 or 24 is a big number. Less than that is also possible. आपको 1 से 100 पे पहुंचना है, 100 से 1 पे आ रहे हो या 1 to 100 जा रहे हो, anyhow you are getting, you get the idea कि पहले 1 से 3 पे जाओ, 3 से 9 पे जाओ, 9 से 10 पे जाओ. Instead of going to 27, go from 9 to 10, then 10 to 11, 11 to 33 like this. So how many edges are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Easily we have got the minimum number of edges. So the correct answer for this question is it's option 4. Is this clear? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करके मूव इन द रिवर्स order, easily you will get the time correct answer in the less time. Next question. Oh, again it's based on the recurrence relation. T of m is equal to t 3m by 4 plus 1. So we can write this as t m divided by 4 by 3 plus 1. Can I apply Master's theorem on this? क्योंकि जब भी हमारे पास recurrence relation आ रहा है, हम पहले क्या ट्राई कर रहे हैं? We check if we can apply the Master's theorem. Can we apply Master's theorem? Definitely yes, because here a is equal to 1, b is equal to 4 by 3, and f of n is nothing but that is some constant number 1. Constant number 1. Master's theorem क्या बोलती है? A should be greater than equal to 1 and B should be strictly greater than 1. आपके पास denominator में कुछ आना चाहिए. Denominator में we are getting 4 by 3. If that is the case, then apply and check, find out the value for n log A with the base B. A is 1. Anything raised to power 0 is 1. यहाँ पे base 4 by 3 है तो मैं A की value 1 को लिख रही हूँ 4 by 3 raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. So ultimately this comes out to be n raised to power 0, that is nothing but 1. दोनों values same है. Type को break करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? You need to take log. So here we'll be taking the log t of m is equal to log of m. Arun, how answer comes out to be log of log m? So undoubtedly this is log m. So correct answer for this question is it's option 1. Yes, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, आपको कोई assumption नहीं लेनी थी, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करनी थी, and that too this is a case of the basic master's theorem. Next question, we have already discussed the similar type of question, easily you can return the answer. T of n is equal to 4t root n plus log n square. रूट वाले क्वेश्चन में तरीका क्या बताया है? Convert this to the format of the Master's theorem and then apply the Master's theorem plus log square n. So here I'll assume that n is nothing but, that is, assume n is equal to 2 raised to power n. So this means that m is equal to log n.
Substitute these values. So we'll get here t of 2 raised to power m is equal to 4t 2 raised to power m by 2 plus log n is m, so this is m square. So this comes out to be, now I'm assuming that this as s, so s of m is equal to 4 s of m by 2 plus m square. Now easily you can apply the master's theorem. Here the value of a is 4, b is 2. Tell me that what will be the answer. A is 4, b is 2, f of m is m square. N raised to power log a with the base b. So it is n raised to power log 4 with the base 2. That is n raised to power log 2 square with the base 2. That is m square. आपके पास m आ रहा है. So write this as m. Anyhow, both are same. अगर tie आ रहा है, so we'll say that s of m is equal to, tie को break करने के लिए we need to take log m. So m is nothing but, आपको question n की form में दिया हुआ है, so t of n is equal to m is log n, so it is theta of log square n log of log n. That is nothing but it's option 3. So the weight of the minimum spanning tree in the graph G calculated using the Kruskal's algorithm. We have discussed two algorithms, Kruskal's and Prim's. यहाँ पे आपको Kruskal से बताना है, but anyhow it really doesn't matter. अगर आपके पास minimum spanning tree के आप cost बता रहे हो, तो Kruskal's and Prim's are gonna return the same answer. दोनों minimum cost spanning tree find करते हैं. The only difference is Kruskal के केस में हमने ये बोला था कि जब आप algorithm run कर रहे हो, even in the middle of the algorithm, you will not get the disconnected graph in case of Prim's. Prim's में हर step पे आपको हमेशा connected tree ही मिलेगा, but Kruskal में at the end जो result आता है that is always connected, but in the middle of the algorithm you may have the incorrected disconnected tree. 18. Okay, so let me write this as A, B, C, D and E. Spanning tree में हमने ये बोला हुआ है कि हमारे पास सारे के सारे vertices आते हैं. All the vertices will be a part of the spanning tree. The only thing is edges are n minus 1. If we have n vertices, then n minus 1 edges are there because that is required to get a connected tree. Spanning tree है तो it will always be connected. अगर 5 vertices है तो definitely will be having 4 edges here. Kruskal's algorithm always starts by taking the minimum edge weight. यहाँ पे unique edge weights दिए हुए हैं. Cycle is not possible. So first of all, we'll take 2. 2 is the minimum edge weight. It's not forming a cycle. 3. आप देख सकते हो using Kruskal in the middle of the algorithm, step 1 के बाद जब आपने second edge add की, we are getting a disconnected graph. 4, 2, 3, 4, not forming a cycle. Can we add 5? B और D के बीच में 5 आ रहा है. अगर B और D वाली edge लेते तो cycle form हो जाएगा, which is not possible. So take the next edge weight, that is 6. This is true. So cost, minimum cost is 2 plus 6 plus 4 plus 3. That is nothing but 15. So correct answer for this question is it's option 2. So this is all about this session. Let me give you few questions as the practice. बाकी ये हम next session में करेंगे. Next marathon will be on Saturday. Next Saturday, next marathon से duration will be more. Okay, since this is the first session, so I can see that very few people are there.
I guess they have not joined the session. So in this uh, from this unit, we will be having two more marathons because data structures or algorithms पे काफी questions हैं. So we will be having one more session on Saturday, and the second marathon will be on Tuesday. Anyone having any doubt? किसी भी topic में algorithms, data structures, obviously बात है अगर आप marathon join कर रहे हो, question solve कर रहे हो, तो आपने revision कर ली होगी. Have you faced any difficulty in any of the topic? कोई difficulty? So जिन लोगों के पास सुपर कोचिंग नहीं है, दे माइट बी लाइक स्ट्रगलिंग विद फ्यू टॉपिक्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है. सुपर कोचिंग में बच्चे हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं लाइव सेशन में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो द रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल. अगर आप कोई भी लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं. अब ऑब्वियसली बात है कि सुपर कोचिंग इज अ पेड बैच, सो यू माइट बी चेजिंग फॉर, यू माइट बी लुकिंग फॉर द स्कॉलरशिप. So we are conducting a scholarship test that is on 15th of May. Duration of the exam will be 30 minutes. And if you score well, if you perform well in this test, you may get up to 90% off or 90% of the scholarship. Okay, so if you want to write this test, आप टेस्ट देकर देखिए, एटलीस्ट आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा. यू विल गेट अ डायरेक्शन कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. सो रजिस्टर योरसेल्फ, गो टू द टेस्ट बुक ऐप. यू कैन रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम. 8 AM से 12 मिडनाइट तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो. एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज या कंसर्न्स है, हर स्लाइड के ऊपर मैंने एक नंबर शेयर किया हुआ है. दिस इज द नंबर फॉर द सपोर्ट टीम एंड द कोर्स इंक्वायरी. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द कोर्स, और अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन मेक अ कॉल ओवर दिस नंबर. And in the next marathon, we will have the discussion on the data structures and algorithms. दो parts और कर लेते हैं. This will be part 2, and then this will be on Saturday. And data structures and algorithms का एक और part कर लेंगे, that will be on Tuesday. Then I'll be moving on to the next unit. अगर आपकी कोई preference है, you can tell me that. Telegram group में बता सकते हो, link is given in the description box. और अगर आपको chat section में comment करके बताने, आप मुझे अभी भी बता सकते हो. Completely your choice. So those who are new on this channel, so guys, every Tuesday and Saturday we are having the marathon session. मैराथन ट्यूसडे और थर्सडे को होगा. बाकी के दिन हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं. यू कैन ज्वाइन दो सेशंस ट्यूसडे एंड सैटरडे. टाइम इज 5:30 PM. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द रेगुलर सेशंस ऑन द यूट्यूब. मैं फ्री सेशंस का स्केड्यूल डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, नॉट द सुपर कोचिंग. So apart from this, we have free sessions on Testbook platform, which is a master class, एंड रेगुलर सेशन जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करें. ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सेशंस इसलिए है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने मिस किए हैं, यू कैन ज्वाइन these sessions to learn the concepts. And in this we are having the practice session. ये practice session बहुत ही छोटा सा होता है. तो आपको समझ में आ गया कि मैराथन में कितना डेप्थ में हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और किस तरीके से सेशन चलेंगे मैराथन के. अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, यू कैन कम विद योर क्वेरीज. डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज. सो रेगुलर सेशंस का जो टाइम है दैट इज 9 AM, बी इट द मास्टर क्लास और द यूट्यूब सेशन. दिस इज फॉर यूट्यूब सेशन. YouTube sessions are on Sunday, Monday and Friday. Monday and Friday, and master classes
are on Thursdays and Saturday. Thursday and Saturday. So usually the duration of the regular sessions is like 30 to 45 minutes. तो इसलिए मास्टर क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है, यूट्यूब पे जो टॉपिक कवर हुआ है. एंड इन द मैराथन वी आर गोइंग यूनिट बाय यूनिट. Unit wise we are covering questions. और मास्टर क्लास में टॉपिक वाइज चल रहे हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दिस इज टॉपिक वाइज. तो जिन लोगों को टॉपिक वाइज में प्रॉब्लम आ रही है, आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों ज्वाइन कर सकते हो. कंप्लीटली योर चॉइस. अपार्ट फ्रॉम दैट, सुपर कोचिंग बैच इज गोइंग ऑन. For paper 2 we are having daily 2 sessions, one in the morning and other one in the evening. For more details you can again, I repeat the same number. So number is on the screen, 8045 888812. You can make a call or just explore the link which is given in the description box. आपको पूरा का पूरा structure and schedule समझ में आ जाएगा. Since I cannot see any doubts or queries, so we'll end our discussion here. Any doubt or query? आपके साथ एक लिंक शेयर किया गया है. जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म एंड प्रिपेयर द क्वेश्चंस, प्रिपेयर योर सब्जेक्ट. अगर अभी भी आपको लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स प्रिपेयर नहीं है, सो एक हफ्ते का और टाइम लीजिए, फिनिश इट ऑफ एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. गुड नाइट.